ਅਸੀਂ एरीन्स ਤੇ एरोमेटिसिटी वाले चैप्टर ਦਾ लास्ट टॉपिक कर रहे हैं. With this topic we are going to end this chapter. बाईफिनाइल ਦਾ सिंथेसिस ਤੇ रिएक्शंस डिस्कस करांगे. बाईफिनाइल ਦਾ सिंथेसिस है जेड़ा one of the methods is using Grignard reagent. How we use Grignard reagent? I will write the general reaction. For example, alkyl magnesium bromide. This is called Grignard reagent. ते alkyl के ऊपर की चार्ज होता है? There is a partial negative charge and it is a strong nucleophile. क्यों? क्योंकि जेड़ा मैग्नीशियम है ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, strongly electropositive. It is a alkaline earth metal and metals have tendency to have positive charge, and due to this reason this alkyl group has negative charge, and if we treat it with an alkyl halide de vich polarity ki hundi hai? Of course bromine is electronegative, is karke de upar partial negative charge hai. te jehड़ा alkyl group hai ede upar there is a partial positive charge. Now this nucleophile either the negative charge hai, it will attack at this because it has positive charge. ते इत्थे की ऐड हो जाएगा मैग्नीशियम के ऊपर. This bromine will add on magnesium, giving us this substance. So this very reaction is used to prepare biphenyl. For example, let us take this. This is called phenyl magnesium bromide. ते जे आप रिएक्शन कर दी दूजा एल्काइल भी बेंजीन ही ले लिए. So we can write bromobenzene. Now what is the charge on this carbon? This carbon has a partial negative charge because this is a nucleophile. इसी तरह this carbon has partial positive charge. So this carbon forms a bond with this, eliminating halogen. ते halogen कितने ऐड हो जाएगा? मैग्नीशियम के ऊपर. So the substance is formed is biphenyl. Plus of course we get magnesium bromide, and also there is a catalyst used in this substance, nickel chloride or cobalt chloride as catalyst can be used in this reaction. ਤਾਂ ਇਸ reaction ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ application भी है, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ भी ਕੀਤਾ है. For example, ਜੇ phenyl magnesium bromide ਹੋਵੇ plus ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ alkyl group ਲੈ ਲੈਂਦੇ, that is methyl bromide. If we do this, what will be the product? Product will be a alkyl benzene, that is toluene. So just for revision we have discussed this reaction again. So ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਈਫਿਨਾਈਲ ਨੂੰ Grignard reagent ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਨੈਕਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ Wurtz reaction. Wurtz reaction ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ Wurtz Fittig. ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? Fittig reaction. Fittig reaction ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ 2 moles of bromobenzene ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ. We treat it with sodium, another molecule of bromine, and when these react की होएगा? 2 moles of sodium bromide will be eliminated. It is done in the presence of a solvent, that is dry ether or dry acetone. Product formed will be a biphenyl. ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ the whole apparatus should be moisture free. ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਡੀਅਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ we cut sodium with a scissor so that ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ upper layer ਹੈ which becomes an oxide of sodium, that is removed, so it will be more reactive. So because if even there is a small amount of moisture ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? sodium water ਦੇ ਨਾਲ react ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ moisture ਦੇ ਨਾਲ react ਕਰ ਜਾਏਗਾ. We will not get this reaction. So this is another reaction of synthesis
Fittig reaction. One more reaction of synthesis is Ullmann reaction or Ullmann synthesis. It is also similar to Fittig reaction with the only difference कि सोडियम की जगह के ऊपर असी कॉपर यूज करते हैं. फॉर एग्जांपल ते अल्काइल हैलाइड है जिहड़ा इहदे विच टिपिकली आयोडोबेंजीन यूज होंदा है. वी ट्रीट इट विद कॉपर प्लस iodine. So cupric iodide will be formed. There will, as in Wurtz reaction, elimination of this. You do it in a copper tube, copper sealed tube. इन्हें जब असी heat करते हैं, product की बन जाएगा. There will be a biphenyl obtained. Another method of synthesis is if we treat benzene, if we heat a molecule of benzene, 2 moles of benzene in a copper tube and the temperature is around 1000 Kelvin, again we get a product that is biphenyl. Now we come to the reactions of biphenyl. Stop. Biphenyl भी electrophilic substitution reaction show करता है और preferably biphenyl दे विच para position दे ऊपर electrophilic substitution होती है. जे आपां ये biphenyl देखिए with respect to this benzene ring, यह जिहड़ी पोजीशन है, this is ortho position, this is meta and this is para. जिद्दां असीं डिस्कस कीता है कि para substitution of the electrophile is the preferred reaction. तो असीं इहदे resonating structures draw करके समझांगे कि इहदे विच para substitution क्यों होंदी है. तो पहले स्टेप दे विच आ जिहड़े pi electrons ने, these will be donated to the electrophile so that the electrophile is added at para position. ਇਹ ਦੋਨੇ बैंड्स इदां ही रह जाणगीਆਂ जिद्दां हैगीਆਂ ने. ਤਾਂ प्रोडक्ट जिहड़ा फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की होएगा, आ कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लूज कीते है ਤਾਂ ਇੱਥੇ पॉजिटिव चार्ज आ गया. these two double bonds were as such. next रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की ड्रॉ करांगे, we will shift this pi bond ਤਾਂ ਇੱਥੇ डबल बॉन्ड बन जाएगी जिद्दां इत्थे शो कीता एरो दे नाल. ਇੱਥੇ pi इलेक्ट्रॉन्स आ गए ਤਾਂ ਇਹ कार्बन ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कीते है ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ पॉजिटिव चार्ज आ गया ਤੇ ਇਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗੀ बॉन्ड. इस तो बाद ਅਸੀਂ दो तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ बॉन्ड शिफ्ट कर ਦਈਏ ਤੇ पॉजिटिव चार्ज दूजे रिंग 'ਚ चला जाए. बट एक ऑप्शन ये है कि लेट अस कंप्लीट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स विद द फर्स्ट रिंग जिथे इलेक्ट्रोफाइल लग गया है. तो थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की बनेगा, दिस विल बी की होया ए बॉन्ड है जिहड़ा दिस इज शिफ्टेड हियर, ए न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होगी. तो ए कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लूज कीते तो इत्थे की आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज. जिहड़ा असी नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करांगे, की करना, वी विल शिफ्ट दिस इलेक्ट्रॉन पेयर हियर. इत्थे पाई बॉन्ड बन जाएगा, इत्थे पॉजिटिव चार्ज आ गया. तो इट विल गिव अस दिस स्ट्रक्चर अगेन, पर असीं ये दोबारा नहीं ड्रॉ करना. तो नाल दी नाल की करांगे, वी विल शिफ्ट दिस पाई बॉन्ड बिटवीन दीज टू कार्बन्स. हम स्ट्रक्चर की बनेगा, एक डबल बॉन्ड बन गई दोनों रिंग्स के विचकार. Here we have an electrophile. We get this structure and a positive charge at this position. इत्थे एक चीज़ होर मैं तुहाडे नोटिस च लिया ना, आ जिहड़ा सिस्टम है दो बॉन्ड्स पैरेलल ने ते कै बॉन्ड, इदां दा जिहड़ा सिस्टम है दिस इज कॉल्ड एज पैराकिनोनॉइड सिस्टम. पैराकिनोनॉइड सिस्टम इज
stable system, so therefore para substitution is preferred. Further resonating structures, shift this electron pair and we will get a next resonating structure. वो की बढ़ेगा, दूसरा रिंग तो उतना ही रहेगा, paraquinoid system, electrophile. So now we have again दोनों रिंग्स ही paraquinoid हो गए, तो इस पोजीशन दे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया. Again shift this electron pair, so we get this is the fourth resonating structure, and then we get the fifth resonating structure, that is a positive charge at this position, and double bond इत्थे shift हो गया, बाकी सारे double bond उधर ही रहेंगे. So again look at this, Ajeda ring है, this is the paraquinoid system, but Ajeda ring है, this is called orthoquinoid system. But in this fourth resonating structure, both the rings are in paraquinoid system. So because of this very stable resonating structures, the biphenyls preferably give para substituted products. Similarly, I expect you to draw all the resonating structures for ortho substitution as well as meta substitution. ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ draw ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਂਦੀ ਹੈ. Now let us discuss a particular reaction, for example nitration of biphenyl. So now if we have नाइट्रेशन रिएक्शन, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਤੇ ਲਵਾਂਗੇ. ਅਸੀਂ ਨਾਈਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਨਾਈਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਨਾਈਟ੍ਰੇਟਿੰਗ ਮਿਕਸਚਰ ਇਜ਼ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਐਂਡ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਨਾਈਟ੍ਰਿਕ ਐਸਿਡ, ਤੇ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਕਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ NO2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਾਈਟ੍ਰੋਨੀਅਮ ਆਇਨ. ਤਾਂ ਇਹੀ ਬੌਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਡੋਨੇਟਡ ਟੂ ਦਿਸ. Nitronium ion will be substituted at para position. So first एक sigma complex बनेगा as we have discussed in previous reactions. ਜਦੋਂ NO2 ਇੱਥੇ ऐड हो गया, ਨਾਲ वाले कार्बन ਦੇ ਉੱਪਰ positive charge आ गया, and there will be the resonating structures. This is a sigma complex we have obtained. ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗਾ? ਇੱਥੋਂ ਪ੍ਰੋਟੋਨ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ, ਰੀਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਐਰੋਮੈਟਿਕ ਕਰੈਕਟਰ, ਐਂਡ we will get para-nitrobiphenyl. And when you do the second time electrophilic substitution, मान लो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰੀਏ concentrated nitric acid ਤੇ concentrated sulfuric acid ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ resonating structures ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ para ਤੇ substitution ਹੁੰਦੀ ਹੈ we get a paraquinoid system which is very stable. So the substitution now occurs in the second ring. So I will write the final product that is obtained. So we can call it 4,4-dinitro biphenyl. So ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ NO2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਫਰੀਡਲ ਕਰਾਫਟ ਐਲਕਾਈਲੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ, we used CH3 positive, ਤਾਂ NO2 ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਆਂਦਾ?
CH3 and the final product will be CH3 at the same positions. ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੈਟਾ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਰਥੋ ਡਾਇਰੈਕਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ, in case of biphenyl the para substitution in the second ring is the preferred product because of the para-quinonoid system that is found in the resonating structures. So with this we finish with our chapter Arenes and Aromaticity.